We were doing the preparation of alkenes. Yes, ma'am. Preparation हो गई थी ना? Last topic बताओ मुझे. What was the last topic? We had done preparation only. I think we were doing the preparation only, and we were have done the various methods. First method we have done was from alkyl halides. How we can prepare them from alkyl halides? Yes, can anyone tell me? Yes. How can we prepare them from alkyl halides? By D, no one? Ma'am, dehydrohalogenation. By dehydrohalogenation. And I told you that this is also called as beta elimination reaction. Beta elimination reaction. Now, in the case of beta elimination reaction, I told you that this carbon atom to which halogen is attached, this is called as alpha. The carbon to which halogen is attached is called as alpha, और adjacent वाला क्या होगा आपका beta. So it means that hydrogen is removed from beta carbon. If the halogen is removed from alpha carbon, hydrogen is removed from beta carbon. So what we are going to get? The reagent used is alcoholic acid. So यहाँ से आपका hydrogen remove हो गया. So what we are getting is CH2 double bond CH2. Is it okay? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Akansha. Now, Akansha, if I am taking this one, what will be the product? Which is the alpha carbon atom? Akansha. Which is the alpha carbon atom? Ma'am, board is not visible on my side. CH. 1 minute. Is it visible now? Yes or no? No, ma'am. Ma'am, it's visible. Yes, Akansha. मुझे भी दिख रहा है बेटा कैमरे में. I can see in the camera it's visible. Ma'am, it's appearing blur on my side. So you join connection. Blur है मैम. Is it blurred? No, ma'am. Clear. Clear है ना? Yes, ma'am. Clear है. Okay. Now the Siddharth, can you tell me? वो कैमरा फ्लिप हो गया. मैम अभी तो आगे से रिवर्स हो गया. मैम बोर्ड नहीं दिख रहा. आपका कैमरा फ्लिप हो गया है मैम. तो मैं दोबारा ज्वाइन करती हूँ. लैपटॉप केबल दिख रहा है. Okay. Now see. Now I think it's clear, very much clear. Yes, ma'am. Okay. Now tell me what will be the product form. Ma'am, KOH and alcohol. यहाँ से क्या बनेगा? वो तो reagent है. What will be the product form? यहाँ से this one is the double bond CH2. अब बीटा दोनों बीटा हैं. Are they both identical? Are they both identical? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. कहीं से भी दोनों आइडेंटिकल है. प्रोडक्ट भी चाहे डबल बॉन्ड यहाँ है या यहाँ है, इट विल बी सेम. तो मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ तो व्हाट आई एम गेटिंग CH2 डबल बॉन्ड CH CH3. अगर मैं यहाँ से भी रिमूव कर दूँ तो भी नंबरिंग सेम होती.
So what we are getting is propene prop 1E. Is it okay? Now suppose I am taking out this one. कौन सा ज्यादा रेट फास्टर होगा? If I am taking is this मैं सिंपल लिख देती हूँ. If I am doing the reaction with Ri or with RBr than RCl, so Ri is more reactive. ठीक है, halogen, if the halogen is iodine, it is more reactive in beta elimination reaction. Is it okay? If the halogen is iodine, it is more reactive in the beta मैम elimination. नीचे नहीं दिख रहा. Ma'am, lower part of board is not visible. दिख रहा है? No, ma'am. अब दिख रहा है? अब दिख रहा है. Yes, ma'am. कि मैं ये ध्यान रखूंगी, मैं इसी पोर्शन पे लिखूंगी. So it means that it is more reactive in beta elimination reaction. Is the point clear? Okay. Now can you? हाँ जी बोलो. मैम it's clear. Okay. Now what is this carbon atom? 1 degree or 2 degree? This carbon 1 atom is degree. 1 degree. A carbon which is attached to only one alkyl group is 1 degree. What about this carbon atom? Akansha? What is this carbon atom? Ayush? What is this carbon atom? 1 degree, 2 degree? Ayush, unmute yourself. Ma'am, 2 degree. It is 2 degree. So out of 1 degree and 2 degree, अगर मैंने 1 degree alkyl halide या 2 degree alkyl halide लिया, then you should remember that order of reactivity of alkyl halides. If I order of reactivity of alkyl halides is 3 degree, 2 degree, 1 degree. So 3 degree alkyl halide is more reactive as compared to 1 degree and then 2 degree. Ma'am? Yes. मैम इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा ना? नहीं, 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि जो उसका कार्बोकेटाइन, द रिएक्शन प्रोसीड्स वाया द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकेटाइन. What happens in this reaction if I am taking suppose this one, अगर मैंने 1 डिग्री लिया तो 1 डिग्री के अंदर सबसे फर्स्ट स्टेप में हमारा HCl- रिमूव हो जाता है. And what we are getting is this carbocation, this 1 degree carbocation. But if I am taking is a 2 degree, so the carbocation in this particular case, the carbocation formed in this one. Now, which carbocation is more stable, 1 degree or 2 degree? Which carbocation is more stable? Ma'am, 2 degree. 2 degree. So reactivity of alkyl halides 3 degree क्यों सबसे ज्यादा reactive होते हैं? Because 3 degree carbocation is more stable. Yes, ma'am. More मैं भी यही पूछ रहा था. ठीक है, तुमने भी ये बोला. तो अगर कोई भी चीज कब रिएक्ट करेगी टू फॉर्म अ स्टेबल कार्बोकेटाइन, इट मींस इफ आई एम टेकिंग इज अ 3 degree alkyl halide, if I am taking is this one. Now this 3 degree alkyl halide is most reactive. Why it is more reactive? Most reactive because it forms a carbocation that is 3 degree, and 3 degree carbocation is more stable. The 3 degree alkyl halide is most reactive because the carbocation formed is more stable. Is it okay? Yes, ma'am. Okay. So the first method we have already done, that is from alkyl halides. Now the second method. Yes, ma'am. Yes. Any doubt? No. Okay. Now the second method is from by dehalogenation. What is the meaning of dehalogenation, Akansha? You are not replying.
अब तो ब्लैक बोर्ड की भी जरूरत नहीं. What is the meaning of dehalogenation? Yes. Can you repeat again? What is the meaning of dehalogenation? Who can tell me what is the meaning of D? मैंने D का meaning बताया था जब halogenation means addition of halogen. Vanshika, what is the meaning of dehalogenation? Ma'am, Vanshika, ma'am, Removal of hydrogen. नहीं, halogenation means removal of halogen. yes, ma'am. Yes, ma'am. Halogen. D का मतलब होता है removal. So dehalogenation means removal of halogen. Now, what are vicinal dihalogens? Vicinal का मतलब होता है if they are attached to adjacent carbon atom. If two halogens are attached to adjacent carbon atom, आपके दो तरह के halogens possibilities है. एक तो हो सकती है कि दोनों halogen same carbon atom पे attached. Dihalogen means two halogens. So one of the possibilities is two halogens are attached to same carbon atom. So if they are attached to same carbon atom, suppose I am taking this compound CH3, CHCl2. So it means here the two halogens are attached to the same carbon atom. So if they are attached to the same carbon atoms, they are called as geminal dihalides. Okay. But if they are attached to the adjacent carbon atom, they are called as common name is vicinal dihalide. Ionic name is 1,2-dichloroethane. If I am taking ethane, is it okay? This is the ionic name. So if I am taking a vicinal dihalide, that is 1,2-dichloroethane, and the reagent used is zinc. If I am heating it with zinc, so what happens is that these two chlorine atoms are removed, two halogens are removed. So what we are getting is CH2, double bond CH2 plus ZnCl2, which is the reagent. Now similarly, if I am taking is this one, now what will be the product Ma'am, obtained? your voice is breaking. If I am taking is this one, what will be the product obtained? Yes, anyone else? मैम CH3 CH CH2. Yes, और बेटा मुझे केवल 2 और 3 स्टूडेंट्स आर रिप्लाइंग, बाकी तो बिल्कुल स्पेक्टेटर्स बन के बैठे. आरव, नेक्स्ट क्वेश्चन आप आंसर करोगे. आरव शर्मा एंड आरव ग्रेवाल. Okay, what we are getting a two halo bromine are removed. So यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया. And what plus is ZnBr2. Ma'am, Yes. ma'am, what is that 2N? What is the 2N. 2N? This is Z. Zn. Okay, ma'am. Okay. Now the third method. Let me write. Now third method is by dehydration. Arav Sharma, what is the meaning of dehydration? Yes, Arav Sharma, Arav Grewal, what is the meaning of dehydration? Yes, Aman, what is the meaning of dehydration? May I tell? नहीं, बाकी स्टूडेंट्स भी तो है ना बेटा क्लास में. Why others are not responding? I don't think I am teaching only 5-6 students. Yes. What about others? Dishita, what is the meaning of dehydration? Dishita,
Unmute yourself. कैमरा भी एक ऑन करने की चीज होती है. Yes, Aman. Are you present, Aman? Yes, ma'am. Let me take the attendance first. I don't know why you are not responding at all. Akansha, present, absent? Excuse me, ma'am. Present. Excuse me, ma'am. 1 minute. Arav? Arav Grewal? Arav Sharma? ऐश्वर्या? Present, ma'am. बेटा आप लोग रिस्पॉन्ड क्यों नहीं दे रहे? ऐश्वर्या बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिहाइड्रेशन? अमन? Removal of H2O. I'm present. अमन, मैंने कितनी बार क्वेश्चन पूछा तुमसे? मैम मैंने बोला तो था यस मैम. आंसर भी तो बोलोगे यस मैम नहीं. जब मैं मैम क्वेश्चन रिमूव OH होता है डिहाइड्रेशन. अटेंडेंस में तो फटाफट चल गया बेटा. अरुमिता? Present, ma'am. ठीक है, मैंने सबके नेम नोट कर लिए. श्रेया, जो मेरे को डाउटफुल है पहले उनके अटेंडेंस ले लूं. Present, ma'am. मानव? Present, miss. सेमवाल? सिद्धार्थ सेमवाल? प्रेजेंट मैम. ठीक है, मेरे को अटेंडेंस मालूम है, so you have to now answer. मानव, you have got Excuse me, ma'am. yes. मैम दिशिता का पूरा कंट्रोल पैनल ही नहीं आ रहा, तो हम वो अनम्यूट ही नहीं कर पा रही, तो हम वो प्रेजेंट है वैसे. अच्छा ठीक है. ओके, यस. Ma'am, the camera is reversed. मानव, what is the meaning of dehydration? मानव, तुमने थ्योरी में बहुत क्लास Water from alcohols by removal of water. D means removal, hydration means water. So if Amanav, now you only tell me, if I am taking in this one, that is ethanol. Part of board is not. क्या हुआ? Ma'am, the upper part of board is not visible. अपर में मैंने कुछ लिखा. अच्छा ठीक है, कर देते हैं जस्ट. Okay. Yes, ma'am, it's visible now. Now, Manav, now you tell me, this is a type of beta elimination. Beta means alpha से अगर आपका ठीक है, beta elimination ratio. This is alpha and this is beta. Manav, what will be the product form? the which gets moved. Manav, yes. So it becomes ethane. We are getting is CH2, double bond CH2, and the reagent used is, in this case, what we are taking is concentrated sulfuric acid in the presence of heat. We are heating it in the presence of concentrated sulfuric acid. Is it okay? Now, if I am Arumita, now you have to answer me. If I am taking this compound and we are reacting concentrated sulfuric acid, what will be the product obtained? Arumita? Ma'am, CH3, single bond CH2, double bond CH2. It's very, very good. This is alpha and this is beta. So if from alpha we are removing OH, from beta we are removing H. Okay, so these two are identical. The first one and second one are almost identical. This one by dehydration and by this one. From alkyl halides by dehalogenation and by dehydration of alcohols. In both of them, beta elimination reaction is observed. Okay. Physical properties, I have already told you. Yes or no? Lower ones are, what type of forces are present in 12 keys? Can anyone, Siddharth Sharma, can you tell me why this is a gas, but CaH16 is a liquid? Yes, Siddharth Sharma.
Yes, Linoy. Linoy. Yes, ma'am. Why the lower alkene is a gas but higher one are liquid? Well, what can you repeat? Why C2H4 lower alkene is a gas but higher one is a liquid? No. Lakshay, Jayan, Yes, ma'am. why lower compounds are gases and higher ones are liquids and solids? Ma'am, van der Waals forces increase with increase in size. Yes, very good. As with the molecular masses increases, van der Waals forces of Ma'am, the above equation is wrong, ma'am. Ma'am, above the physical properties. why? Ma'am, the product should be CH3, CH2. Okay, okay. This one I is correct. Got the point, okay? Wrong नहीं बोलना, so बोलो hydrogen extra was. Okay. But anyway, very good. You have pointed out the mistake. Okay, next topic is chemical properties of alkenes. और alkenes और alkynes की बिल्कुल same है. ठीक है? तो एक का मैं करा के दूसरे का आपका revision हो जाएगा. Chemical properties of alkenes. Now the first type of chemical property is addition reaction. Now, if I am taking his addition reaction, the first one addition of hydrogen. This we have already done. Yes or no? What happens if I am adding hydrogen in the presence of nickel or platinum? We have already done. Yes, Ma'am, it will become alkane. alkane. CH3, this is called as catalytic hydrogenation. And it is used to convert unsaturated alkenes. Unsaturated means which have a presence of a double bond or triple bond. Unsaturated alkenes, which are also called as oils, into saturated hydrocarbons. And these saturated hydrocarbons are called as alkanes. Alkanes means oil. It is used in the food industry to convert oil into fats. Oil into fat. It is used to convert oils into fats. Okay, so this is the meaning of addition of hydrogen. Next one is addition of halogens. Okay, Shreya, say yes, ma'am. Shreya, Yes, ma'am. yes, Shreya. Can you tell me this one? If I am adding this chlorine to this compound, what we are going to get? Yes. बेटा दोबारा बोलो कुछ डिस्टर्बेंस पूरा मुंह खुल गया है डॉक्टर Ma'am, I don't know. समझ ही नहीं आ रहा कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या बेटा मानव what will be the product formed Chlorobutane. how many carbon atoms here formula बोला करो बेटा formula बोलो मेरे को ऐसे मत बोलो CH3, CH2, and then there is a Cl. here or on both No, I think only in the last one. हो गया इस कार्बन के भी बॉन्ड्स कम हो गए ना इस कार्बन is forming only 3 bonds one with hydrogen Yeah. on both sides this is called as halogenation addition of halogen this is called as halogenation is it okay Yes, ma'am.
Now, if I am taking his next one, third one, addition of HCl, HS. It means X can be any halogen. X is always a halogen. Halogen means chlorine, bromine, iodine. Okay, we are taking these three halogens. Chlorine generally we do not take because it is highly reactive. Chlorine will store connects quite a tedious task. So if I am taking suppose this compound and we are adding this HS, what will happen? Yes, who can tell me? Aman, what will happen in this particular case? Yes, Aman. Yes, ma'am. Ma'am, एक minute. Now there are two different atoms. So what is going to happen? Ma'am, double bond हट जाएगा. Okay, yes, very good. Double bond will be removed. Then single bond आ गया. Then Ma'am, carbocation बनेगा. mechanism छोड़ दो. मैम Cl किसी भी एक पे X मतलब किसी भी एक पे. अब now एक पे H आ गया, X पे X आ गया, ठीक है? अच्छा, Yes, ma'am. Yes. like this. और इसको नंबरिंग कैसे करेंगे हम? Suppose मैंने क्लोरीन ले लिया. How will we do the numbering? क्लोरीन की साइड से नंबरिंग करेंगे. Right side से 1, 2. So it is 1 chloroethane. Yes or no? अच्छा, तो इसको रिवर्स करके लिख देती है. अगर मैं क्लोरीन यहाँ लिख देती और हाइड्रोजन इधर लगा देती, will it be same or different? Ma'am, same. Same. So it means in this particular case, if we are, क्योंकि यहाँ पे only 2 carbon atoms and it is a symmetrical alkene. Symmetrical means on both the side of double bonds, 2 identical carbon atoms are there. This is the example of symmetrical alkene. It means double bond here also CH2, here also CH2. Now, is this a symmetrical alkene? This one. Are these two groups same or different? Different. Yes. Lakshay, are these two groups same or different? Arumita? Ma'am, Yes. Are these two? मैम जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है मैम उसमें आई मीन प्रोडक्ट में CH थ्रू मतलब इस जो आपने लिखा है इसके अलावा ये भी आ सकता है ना CH3 CH2Br. हाँ, मैंने HCl लिया है बस अभी. मैंने इसको बाद में मॉडिफाई करके क्लोरीन कर दिया. ठीक है? अगर मैं Br ले ओके मैम. जाता हूँ, it depends on which halogen I am taking. Now my question is this a symmetrical or unsymmetrical alkene? Yes. I'm unsymmetrical. Unsymmetrical. So what we have got is a unsymmetrical alkene. Clear? क्योंकि one side is CH double bond CH2. So एक side CH है, other side CH2. Okay, now what are the two possibilities? Hydrogen can come here, chlorine can come here, first possibility. So if hydrogen is coming here and chlorine is coming here, so what we are getting is CH2, CH2, CH2 here. But if reverse is taking place, if hydrogen addition reaction is always across a double bond. Okay, this bond is going to break. तो अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे, suppose आपका क्लोरीन इधर आ गया, हाइड्रोजन इधर आ गया, तो are they same or they are different? Are these जैसे यहाँ पर था हाइड्रोजन क्लोरीन इधर आ गया, सेकंड केस में ये दोनों सेम थे. These two are same, they are identical. But in this case, are they same or different? Different. Different. Why? One of them is nothing to chlorine for fighting structures chlorine, one of them is one fluoropropane. And second is fluoropropane. Yes or no? So these two are different. So which will be the major product and which will be the minor product? How to identify? Now it is determined by a rule which is called as Markovnikov's rule. And this will be the major product.
this is going to be the major product. And this is the major product here. Is determined by a rule which is called as Marconi's rule. Just anyone check it whether the mechanism is in syllabus. I think it's there. Please can anyone check it? The major product is determined by a rule that is called as Marconi's rule. Can someone just tell me the deleted portion from hydrocarbons that I have already informed you? Okay, meanwhile, others write down what is Marconi's rule. Statement is there that I know. Marconi's rule. Write down the statement. During addition reactions, okay, just note it down. I am taking from my phone. पहले note कर लो, मैं rule dictate करे. You can write simultaneously. Okay, write down the rule. During addition reactions across unsymmetrical alkenes, during addition reactions across unsymmetrical alkenes, the negative part of the attacking reagent, the negative part during addition reactions across unsymmetrical alkene, the negative part of the attacking reagent, goes to the carbon, the negative part of the attacking reagent goes to the carbon having lesser number of hydrogen atoms. Goes to the carbon of double bond, goes to the carbon of double bond, having lesser number of hydrogen atoms. The negative part of the attacking reagent goes to the carbon of the double bonds, having lesser number of hydrogen atoms. This is very, very important. What does it mean if I am taking this one? We can see that it is an unsymmetrical alkene. Okay? Why it is unsymmetrical? You can see these carbon atoms, these two carbon atoms. Okay? Now one of them is having one hydrogen atom, other is having two hydrogen atoms. So this is an example of an unsymmetrical alkene. पूरा मैकेनिज्म आपका डिटेल में है, जो डिलीटेड पोर्शन था वो पहले हो गया प्री रेडिकल मैकेनिज्म. Other things are all in syllabus. Now if I am adding in HX, what is the negative part in HX? Vanshika? Ma'am, X. Negative कैसे HX कैसे break होगा? Ma'am, H plus and X minus. H plus and X minus. Aishwarya? Now what is the negative part? X minus. Where it will go? To which carbon atom? CH or CH2? It will get attached to CH. Then अच्छा Aishwarya बोले कि Varun आपने बोला the negative part of the attacking reagent. It means this negative part. It goes to the carbon having lesser number of hydrogen atoms. Means इधर आ गया? Yes, ma'am. Addition reaction is only across the double bonds. ये दोनों के across होगा इसको consider नहीं करेंगे. The negative part is coming here. So what I am getting is CH, यहाँ आ गया CH3. Is it fine, all of you? Yes, ma'am. Okay. Next, and Aishwarya, now you tell me if I am taking this compound.
and I am adding it with Cl. What will be the product formed? Yes. Aishwarya, the reaction will be across only these two carbon atoms which are having a double bond. Aishwarya, Ma'am, Cl will go to C. I mean carbon. carbon. Okay. It means the negative part goes to the carbon having the lesser number. So this negative part will go to this carbon. Yes or no? Yes, ma'am. Now Aishwarya start telling the product. मैं यहाँ तक लिख देती हूँ, ये तो same ही रहेगा. CH3, CH, CH3. Now further what should I write, Aishwarya? Yes. Ma'am, CCl. यहाँ पर क्या आएगा? CH के साथ यहाँ हाइड्रोजन आएगा, कुछ आएगा यहाँ पर CH पे? No, ma'am. क्या लिखूंगी मैं? जल्दी बोलो ना. Yes, anyone else? Himanshu? Jayant? Sayyam? Ma'am, CH ही लिखोगे. C will become CH and it will get attached to a chlorine. देखो, And the double bond will get. इस कार्बन के साथ है तो H प्लस कहाँ आया था? मैम डबल बॉन्ड हट जाएगा और कार्बन के साथ Cl लगेगा, CH3 मतलब 2 CH3 और 1 Cl लगेगा. यहाँ पर भी तो H आएगा. हमने HCl ऐड किया तो अगर नेगेटिव पार्ट इसके साथ आ गया तो हाइड्रोजन तो इसके साथ होगा ना. यहाँ पर भी देखो क्या हुआ था. नेगेटिव पार्ट यहाँ भी X लग गया. H तो इसके साथ आया था ना. यस मैम. CH2. हाँ, ये मैं बोल रही हूँ. CH2 सिंगल बॉन्ड C, CH3, CH3 और साथ में आ गया Cl. Yes or no? यस मैम. So this will be the major product. अच्छा, माइनर क्या बनता है? माइनर क्या बनेगा? अगर मैंने यहाँ लिया, ये तो मेरा मेजर बन गया. माइनर क्या बनेगा? अपोजिट, ये तो मेरा मेजर बन गया अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ सोल्यूशन. बट द माइनर प्रोडक्ट में उल्टा हो जाएगा. माइनर प्रोडक्ट में यहाँ पर उल्टा हो गया. यहाँ पर मार्कोनिक ऑफ सोल्यूशन में x माइनस ही आ गया एंड अपोजिट का मतलब ये प्रोडक्ट. ठीक है. So one of them is the major, other is the minor. In this I am not writing the minor. Okay. Major, अब आप कई बार आपसे केवल मेजर प्रोडक्ट पूछा जाता है तो यू हैव टू कंसंट्रेट फर्स्ट ऑन द मेजर. दूसरा वाला आपको क्या बनेगा? माइनर. ओके. नाउ आई एम आस्किंग वन मोर क्वेश्चन. इसी में मैं दूसरे रिएक्शन भी इंट्रोड्यूस करा रही हूँ just to explain to you much better. Now if I am taking suppose this compound, now who wants to tell? जिसे अभी तक आंसर नहीं किया बताओ. Yes. कोई और स्टूडेंट ट्राई करो जिसने आंसर नहीं किया. If I am adding this water in the presence of reactions, ये सारे addition reactions हैं. All these are the addition reactions. If I am adding water, water का क्या मतलब है? H plus and OH minus. Negative part is OH minus, positive part is H plus. What will be the product obtained? Sayyam, I want to answer from you. Yes, Bhavya. सैयम, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा क्लास में. मुझे लग रहा है बस 2 बच्चे आंसर कर रहे हैं. यस भव्या. Yes, ma'am. Yes. Please tell fast, Bhavya. Ma'am, please repeat what I have to tell. मेरे को ये बता दो इस कार्बन के साथ क्या आएगा? H या OH? Ma'am, OH. नेगेटिव पार्ट कौन सा है? What is marconic of fluid, Bhavya?
Yes, ma'am. Markov's rule. Ma'am, please repeat actually. तुम्हारे घर में कोई और भी क्लास ले रहा है साथ साथ, मुझे लग रहा है ना? Yes, ma'am, my sister is there. ओके ओके, आई थिंक तो आप नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। और नेक्स्ट बताओ, दमन। दमन और भव्या मिश्रा। यस, भव्या मिश्रा भी है एक बेटा। ओके ऐश्वर्या, यू वांट टू टेल? आई थिंक Yes, ma'am. May I- OH will go to carbon. कौन से कार्बन था इसके साथ? ओके यस, OH विल गो टू, बोलो भव्या जल्दी बोलो, क्या मतलब राइट फर्दर नाउ। ऐश्वर्या, कोई भी बोलो, आर्यन बोलो। Ma'am, after And that, ma'am, ma'am, it will be hydrogen ma'am will go to CH3 Cl. single bond C, CH3, ma'am C के नीचे ma'am OH है, फिर single bond CH3. Is it okay? What is Yes, that? 1, 2, 3. These two methyl, 3 carbon atoms means propane, 2 on. This will be the major product. And what will be the minor? Minor में opposite हो जाएगा plus CH3C, CH3. Minor में उल्टा हो गया. Major में OH minus इधर लगा था और H इधर. Minor में क्या होगा? यहाँ पर आ गया H. This will be my minor product. Minor पे थोड़ा सा focus करो. Okay? This will be my minor product. So we are getting two products. One of them is major and other is minor. Clear? Okay. Now suppose one more example in this case. If I am taking in this one, पहले आपको देखना होगा कि ये आपका unsymmetrical था. First we have to check whether the alkene is symmetrical or unsymmetrical. Now if I am taking in this compound, and what I am adding is sulfuric acid. Sulfuric acid breaks down from H plus and O minus SO3H. Okay, sulfuric acid means H plus O SO3H. Now, will the Markovnikov rule be followed in this case? Yes or no? Is this symmetrical or no, not? ma'am. This is symmetrical. So, in the case of symmetrical, because both the carbon atoms are identical, we can see they have only one hydrogen atom. So, anywhere it can happen. Okay? कहीं पर भी H आ जाएगा and anywhere OSO3H हो. So, what I am getting is CH3CH O. इसके साथ मैंने H दिखा दिया. यहाँ पर दिखा दिया OSO3H. CH3. ये सब एक के साथ आ गया H और एक के साथ आ गया OSO3H. चाहे मैं यहाँ दिखाऊं या यहाँ दिखाऊं एक से, और इसका IUPAC नेम क्या होगा? How many carbon atoms? Ma'am, 4. 4. So 4 means हम common name करते हैं, इसके IUPAC नहीं होते, butyl hydrogen sulfate. और किसमें होगा? आपने CH की जगह CH2 लिख दिया. यहाँ पर मैम जिस पे OSOH है, OS3OH है. It is called a butyl hydrogen sulfate. It is और किसमें अटैच है? 2 पे. ठीक है, नंबरिंग यहाँ से 1, 2, 3, 4. So it is 2-butyl hydrogen sulfate. But what happens in this case? If I am adding in this case, then what will be the product? Will the Markovnikov, is it symmetrical or unsymmetrical? Unsymmetrical. Unsymmetrical. अब बेटा Markovnikov rule की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, 12th में नहीं तो होगी इसके बिना. It is unsymmetrical. So which rule is followed? In the case of unsymmetrical, Markovnikov rule is followed. Markovnikov rule आपका हर जगह आएगा, भी alkynes में भी आएगा, हर जगह आएगा. Okay, now what will be the product in this case? मैम मेजर में बीच वाले में SO3 लग जाएगा. Yes. Major में जो negative part means H plus O minus SO3H. The negative part goes to the carbon having lesser number of hydrogen atoms. That is CH3CH, O SO3H, और साथ में आ गया CH3.
So this is called as propyl. Three carbon की common names होते हैं, not the IUPAC name. Propyl hydrogen sulfate. Is it okay? So now I have explained to you what is Markovnikov's rule. So most of the time, whenever the addition reactions are there, what we are following is the Markovnikov's rule. Okay. Now I am explaining the mechanism of Markovnikov's rule. This mechanism is in your syllabus. अब बेटा इसको बहुत Ma'am, the part of the board is not visible. clear, this one, lower part, Ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. Now what I am taking is mechanism of Markovnikov's rule. Mechanism of Markovnikov's rule. Now, in the case of Markovnikov's rule, it proceeds via, main point ये ध्यान रखना है, it proceeds via, मैम अब ऊपर वाला पार्ट विजिबल नहीं है. ये तो दिख रहा है जहाँ मैं लिख रही हूँ, Yes, ma'am. नो मैम. ये तो दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है. ओके, तो यस मैम. यस मैम है. ठीक है, mechanism, it proceeds via formation of carbocation. Which carbocation is more stable? तो बार-बार ये point आ रहा है, which carbocation is more stable? थर्ड डिग्री. 3D. ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन तो रटा होना चाहिए, इनके बिना आपकी 11th होगी ना 12th होगी, और 11th पे 11th में ही कर लो, मेरे को अटेंडेंस भी इतनी कम है, कुछ बच्चे आए नहीं, आई डोंट नो व्हाई दे आर एब्सेंट. इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, नहीं तो रहोगे 12th में. Mechanism is it proceeds via the formation of carbocation, and all of you know that order of stability of carbocation is 3 degree, 2 degree, 1 degree. So in the mechanism, step 1 is addition of H plus. अगर मैं ये reaction कर रही हूँ, I am taking this reaction, इसका mechanism ले रही हूँ, ठीक है? If I am adding is Hs, okay? आपको मालूम है Markovnikov's rule में आपका या तो नेगेटिव पार्ट ये बनेगा, this I have already told you, or what we have got is this one. Which is a major product, first one or second one? Which is a major? This one or this one? First. मैम फर्स्ट वन. First one is the major product. Very good. मान बच्चों को पढ़ाने बस. बाकी students, I want a response. ठीक है, Daman, are you present or should I mark you absent? Daman? Daman? Unmute yourself. Okay, I am marking you absent. It proceeds via the formation of carbocation. Carbocation कब बनेगा जब इसका positive part attack होगा ना, positive part में तो negative charge, so first is addition of H plus. Now when the H plus is added to this compound, ठीक है, अब आपका दो possibilities है, addition reaction will always be across the double bond. ओके, तो H प्लस यहाँ पर भी ऐड हो सकते हैं और H प्लस यहाँ पर भी हो सकते हैं. अगर H प्लस यहाँ ऐड हो तो क्या बनेगा बताओ? If H plus is adding here, then what will be the product form? यहाँ पर H आ गया, so what will be the product form? CH3, ये CH3 CH2 plus. CH3 plus. जब ये बॉन्ड ब्रेक हो, कैसे ब्रेक होता है? अगर H plus ऐड होता है तो ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होता है. अगर यहाँ पर जब ये ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा, ये मैं दो बातें मिटा दूं, इसको समझ लो बस. अगर ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो गया तो यहाँ का नेगेटिव चार्ज, यहाँ का पॉजिटिव चार्ज, और जब नेगेटिव चार्ज था वहां पर क्या ऐड हो गया? H plus. तो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग CH3 CH2 CH2 plus. अच्छा, अगर रिवर्स हो गया
अगर H2 यहाँ ऐड हो गया क्या होगा? अगर H2 H प्लस यहाँ ऐड हो गया तो क्या होगा? अगर ऐसे मूवमेंट हो गया यहाँ आ गया पॉजिटिव यहाँ आ गया नेगेटिव एंड H प्लस इज एडिंग हियर, देन व्हाट शुड वी गेट? Yes. Linoy, Jayant, answering Jayant बोलो. What we are going to get? Yes, ma'am. हाँ बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा इसमें? सेकेंड केस. Yes, ma'am. CH. अगर H मेरा यहाँ ऐड हो रहा है सपोज, यहाँ पर तो मैंने दिखाया कि H यहाँ ऐड हो गया तो यहाँ प्लस चार्ज आ गया. अगर रिवर्स हो प्लस मेरे यहाँ ऐड हो रहा है, then what should I write? Ma'am, then it should be like the charge would be like जहाँ पे था पहले वहीं रहेगा और ma'am अगले वाले में CH3 हो जाएगा. Yes, it will be like this. So what I am saying, अब ये एरो छोड़ दो, सिंपली याद रखो. अगर या तो H इधर ऐड हो गया, तो अगर H इधर आ गया तो उसका पॉजिटिव चार्ज इधर चला गया क्योंकि इस कार्बन की तीन ही बॉन्ड्स है. मैं ऑडिबल लाइक आवाज आ रही थी मेरी. आ रही है. ओके मैम. कार्बन के आपको मालूम है 4 बॉन्ड बनते हैं. इसके तो 4 बॉन्ड बनते हैं ना. इस कार्बन का 2 हाइड्रोजन है, 2 बॉन्ड से हो गया 4 बॉन्ड्स हो गए. बट व्हाट अबाउट दिस कार्बन? इसके तो 2 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन. तो पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन के पास आएगा जिसके बॉन्ड्स कंप्लीट नहीं है. सेकंड केस में मैंने दिखाया कि H इधर ऐड हो गया. तो अगर H को इधर ऐड हो गया तो पॉजिटिव चार्ज इधर चला गया. नाउ व्हाट इज व्हिच इज मोर स्टेबल? ये आपका है 1 डिग्री कार्बन एटम. ये कार्बन एटम है 2 डिग्री. व्हिच इज मोर स्टेबल कार्बन एटम? First one or second one? Ma'am, 2 degree. This is more stable. ठीक है ना? Yes or no? A 2 degree carbocation is more stable because this carbocation is 2 degree, so it is more stable. तो major product किससे बनेगा? More stable. ठीक है? क्योंकि 2 डिग्री ये वाला रिएक्शन के 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो 2 डिग्री प्रोडक्ट will be more stable. So in the second part, फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया H प्लस ऐड हो गया. अब हमने H किया ना, तो सेकंड स्टेप इज एडिशन ऑफ X माइनस. X माइनस किसमें ज्यादा इजीली ऐड होगा? इसके अंदर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बिकॉज़ इट इज मोर स्टेबल. ऑलवेज द प्रोडक्ट फॉर्म शुड बी मोर स्टेबल. तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल. ठीक है? तो X माइनस will add across to this carbon atom and what we are getting is this one. Is it okay? So this will be my major product. Major product में क्या है? Negative part is adding to the carbon which is having the lesser number of hydrogen atoms. So Markovnikov rules proceed by the formation of carbocation. Is the point clear? Yes or no? मैंने आकृति मैम को बोला था she will start the class at 12:05. Yes, ma'am. 12:05 से आकृति मैम 5 मिनट्स ब्रेक मिल जाएगी. ओके. अब मैं आपको एंटी मार्कोनिको फ्लूइड बस एग्जांपल दे रही हूँ. मैकेनिज्म कल करेंगे फिर बोलने से बहुत ज्यादा हो जाएगा. ठीक है? और ऑर्गेनिक बेटा सारे टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट हैं, खासकर ये एल्कीन्स वाला क्योंकि एल्काइंस में सेम रिएक्शंस रिपीट होंगे. एल्कीन्स को अच्छे से करना तो एल्काइंस तो बच्चों का खेल है. सबसे ज्यादा रिएक्शंस और मैकेनिज्म न्यू कॉन्सेप्ट इसी टॉपिक में. So please revise it very thoroughly. Okay. Now the next topic that I am just introducing for the questions कराऊंगी alkynes के मैं साथ-साथ करा दूंगी. ये पढ़कर आओगे इसी से प्रैक्टिस कराते हुए रिकैपिचुलेशन के वे में alkynes के रिएक्शन कराओगे. Is it okay? तो आपका रिकैप भी हो जाएगा, टॉपिक भी कवर हो जाएगा. तो आप ये पढ़कर आओगे. एक बच्चे से पूछूंगी जो बिल्कुल कहते हैं ना ग्रुप दर्शन बन के बैठे हुए दर्शक, उनसे तो खासकर पूछोगे. आई एम नोटिंग डाउन द अटेंडेंस. ओके. एंटी मार्कोनिकस में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा. लेकिन जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है चीज, जनरली इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ HBr. बाकी कुछ भी नहीं. HF होता है HBr प्लस पेरोक्साइड. Peroxide मैं बताऊंगी कल कौन सा होता है. It takes place in the presence of HBr plus peroxide. So suppose I am taking this compound, same compound. अगर मैंने इसमें simply HBr ऐड कर दिया, peroxide नहीं दिया, तो आपको कौन सा रूल फॉलो होगा? मार्कोनिकॉस. You can tell me the product. Rn को छोड़ के
Ninoy and Lakshya, I want to answer from you. Arumita also you can answer. If I am simply adding this HBr, not peroxide, then Markovnikov rule is followed. And what will be the product? Yes, I have asked two students. Yes, ma'am. हाँ बोलो आंसर. What will be the Markovnikov rule? मैंने कहा अगर peroxide नहीं दिया, what we are following is Markovnikov rule. What will be the product? बहुत सारे कर लिए हैं Markovnikov. मैम मैं यार नहीं यही बोलेंगे इनको क्यों नहीं आता? ये भी बताया बेटा. गलत बताओ कोई बात नहीं ट्राई से करो. Ma'am, CH3, CHBr, and CH3. ये आपका Markovnikov rule है. That is the negative part is going to the carbon having lesser number of hydrogen atom. Now you only tell me if I am asking anti-Markovnikov rule लगा क्या होगा? Ma'am, CH3, CH2, CHBr, CH2Br. ठीक है कुछ भी नहीं है बस rule opposite कर दिया. So this is anti-Markovnikov rule. So write down the statement of anti-Markovnikov rule. A statement लिख के छोड़ रही हूँ. Statement of anti-Markovnikov rule. Actually मुझे ना बीच में कुछ दिन ऑफिशियल काम के लिए भी जाना है एज अ ऑब्जर्वर इन सर्टेन अदर स्कूल. वो भी मैं आपकी क्लासेस नहीं ले पाऊंगी. दैट डे ऐश्वर्या मैं विल कंटिन्यू और व्हाटएवर इट विल बी देयर. ओके कुछ दिन होगा. मैं पहले कोशिश कर रही हूँ कि इतना कवर अप हो जाए बट लेट्स सी. Okay, write down the statement of anti-Markovnikov rule. The negative part of the attacking reagent, the negative part of the attacking reagent goes to the carbon. The negative part of the attacking reagent goes to the carbon having maximum number of hydrogen atoms. The negative part of the attacking reagent goes to the carbon of the double bond. The negative part of the attacking reagent goes to the carbon of the double bond having more number of hydrogen atoms. That's all. We will continue tomorrow. The negative part of the attacking reagent goes to the carbon of the double bond having more number of hydrogen atoms. Okay, और कुछ बच्चों का मैं नाम पॉइंट आउट कर रही हूँ. They have not given any response. साहिल मैंने पूछा भी नहीं और आपने खुद भी नहीं बोला. संयम कक्कर, श्रेया, सिद्धांत शर्मा, सिद्धार्थ सेमवाल, वानी का भी आज आंसर. ओके मैम. Yes, ma'am. You can leave.